अगर 7 अबे सीवुड्स के पास ओके सॉरी एंटर ओके 15 oh wow मतलब 15 हाईएस्ट मेरी माँ तो ये नहीं करेगी मेरी माँ बोलेंगी तेरे को दूसरों से क्या लेना देना तू क्यों लाया इतना कम ठीक है बढ़िया मेरे को तो बता दे मेरी माँ अरे उनकी ईमेल पे भी गया है ना मैं बताऊं ना बताऊं उनको पता है यूटी करके उन्हें पसंद हमने देखा देख मेरे को जब आया ना तो मेरे को मम्मी को भी आया था ना इंस्टाग्राम पे सब लोग करते हैं अगर कोई नहीं है तो वो पकड़े कपड़ा नहीं मैं वो सब है तू भी आंसर मेरे से नहीं नो नहीं पता है मेरा है RC_D as a को ठंड लग यार बहुत वियर्ड है तो समझा नहीं लॉजिक मेरे खुद के भी इसका मेरे को यार कुछ नहीं आया समझ में वो इसका अकाउंट संस्कृति यार वो अभी हिंदी में क्यों आ रहा है ओ वो तुम वहां पे डाक के हां मिल गई भाई सर नहीं आया इधर भी नहीं है सर आएंगे तेरा हां ये वाला जो मुझे खोल के रखा भाई मैंने यहाँ पे लोगों इतना क्या है मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ मैं बस बहुत सारे लोगों से बात कर कोई एक साथ में मैं बहुत ज्यादा मुझसे बात कर ये कौन चल क्या बोल रही है बंदा बैठ कर दिस इज सो वियर्ड डूड बैठ कर दिया अबे यार संस्कृति इतना बड़े होने के बाद भी ब्रो व्हाट शट अप मैं वहां खेल गया अभी धूप में जाना चाहिए और जीवन सुखी है इधर ही गिरना आता है आना वही टाइम्स ऑफ इंडिया इसने 100% लाके मुझ पे सब पे प्रेशर डाला है इस बच्चे ने अरे वो मुझे क्या पता कैसे सर्च पे उसे भाई अर्श चौधरी द यूट्यूब पे फेमस हो जाऊंगा भाई क्या खा के पैदा होते हैं जो इतने मार्क्स आए हैं नहीं इसने स्पॉन्सर कर अर्श चौधरी स्टेट मेरी नवी मुंबई अरे यार लेकिन 100% कैसे सच्चे को ना 500 में से 500 बोला ICSE तो अरे नहीं देता अरे हाँ नहीं देता देते ही नहीं है भाई इंग्लिश में शक्य ही नहीं है शक्य ही नहीं है अगर हर सब्जेक्ट में 100 आए तो इंग्लिश में तो पॉसिबल ही नहीं है ही नहीं ना इंग्लिश में तो टीचर बोलते हैं नहीं तो मैं क्या करूं एग्जैक्टली मेरे ख्याल से ये फेक है 100% नहीं आया 99.9 आया ठीक है 100
नहीं तो फिर ऐसे देते हैं वो 99.8 99.4 ये फेक लग रहा है। इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? 99 उनको लगा 100 कर दो। इससे हमको क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है घर का पहले बोल सकते थे ना 100% पॉसिबल नहीं है, हाँ, तो नहीं, बोल देंगे 100% भी है। अभिप्राय देखिएगा ना, अभिप्राय है वो गाड़ी में है। What is this? Times of India, exciting news लिखा है उस पर। वही बोला। ओ भाई इसको CF में ले लो यार चना बेचेगा सर नहीं आए सर सर आए ना। हाँ आए मैंने नहीं बोला। अरे हेलो बोल के आया मैं सर को हमारी फेवरेट Hello। देखा बेटा अरे वो जो इसको बता 100% कैसे आएंगे इंग्लिश में तो यही नहीं है इसको 100% वही मालूम है होता है। बट ICSE में कैसे सकते हैं? हाँ वही impossible है genuine shit है अबे okay can we just run through your attendance once just to know your names okay so who is Aryan all right and Abhipray the one who like that greenish color one okay Bharat is not there okay Aditya Gupta you're Aditya Gupta and there's one more Aditya right Yes. so who is that other Aditya absent then Ansh you're Ansh Diana I know Sanskriti Raghav okay and Simi fine साधु वाइस का नहीं सही। पता नहीं क्यों बोलते हैं पहले पढ़ा। नहीं लग रहा है। अबे ना आए क्या? वीडियो से ठीक है। मेरे को लगता है नहीं, दोनों के अलग अलग तो पढ़ाते हैं। 64 ये भी पढ़ाते हैं। What? Diet. भाई ये मैथ्स की बहुत अच्छा है ना 100 ला दिया इसमें तुक्का मार दो 100 टक्के में आ गया। पढ़ाओ हाथ से ग्राइंड कराओ पढ़ाओ। पूरा साल सोच रहा है मतलब कैसा पॉसिबल है? मैं पूरा साल ग्राइंड किया होगा अरे look good yeah गोल्ड क्रेस्ट है, सर्कल एवलॉन है, गोकुल धाम और गूगल ना हाँ सुन मैं ना दुबई किधर कब नेक्स्ट ईयर ही नेक्स्ट ईयर ये साल मेरा होगा या मैं नेक्स्ट ईयर देखता हूं पता है मेरे को मैं तो वियतनाम में सिंगापुर इज लाइक वेरी गुड Good morning, sir. Very good morning. Normally that's room, no? Why you guys are playing here today? Yeah? चलो चलो बैठो. मतलब क्या हुआ? तो पहले बैठ. How many are there today? 1, 2, 3, 4, 5. All are there for my subject, is it? You guys book से बोल रहे हैं. Except one. Who is that? अभिप्राय. वो कौन है? आया था ना पिछली बार. नहीं आया था. What out करे ना? What out क्या था? Hey, did I start with topo with you guys? Did I start with topo? No. Sir, climate में कितनी वर्ष है? चार क्या नहीं नहीं रुक जा. वो बोलता है तो पूछता है. मैं बोलता हूँ पूछता है. क्या climate पता है? Hey, then tell me climate. Where did I sort of panic? actually who takes your This room has this dancing tubelight also. That is yes. Yeah, just check in the notebook. What was that climate last topic? Did I? Oh, you better. He will say everything, but what he doesn't know. What is that? Why Indian climate is known as tropical? That only I finished. that is the other one Johnny Madden.
I am clueless here. I had completed topo sheets in many of the branches. Why your branch is so behind them? ऐसा कुछ नहीं. Like timetable मैंने cancel हुआ क्या? Wait. कब cancel हुआ? सर 3 सैटरडे से हिस्ट्री हुआ. हाँ सर. आपका 2 क्लासेस थे तो हिस्ट्री हुआ था उसकी जगह. But every Saturday I'm available. I'm doing duties. सर बाहर गए थे क्या कहीं इंडिया के? बात होता. He's catching the nerve ना. अभी दोबारा जा रहा हूँ. तब क्या करेगा? सही है सर. That's कोई साइन नहीं है. अच्छा, I think she has written that. What is that answer? Tell me, dear. Why is India climate is Not India, Indian climate. Indian climate known as tropical monsoon? Okay, very good. Now everyone write the same heading. Factors controlling और not controlling नहीं रहेगा. आपका टेक्स्ट बुक में क्या वर्ड दिया ना वही देखा हूँ. क्लाइमेट है ना. यही factors affecting the climate of India. Would you write this? If we have to little bit speed up, I know why you guys are so behind. Factors controlling. वही है ना word? वही. The climate of India. Factors affecting. मेरा CBSE का पोर्शन मस्त जा रहा है. फिर ICSE क्यों रखा है पीछे? क्लासेस नहीं मिली ना सर. हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है. I am available. तो हमारी गली छोड़ जा सर. वही मैं पूछ रहा हूँ why? ये जाति क्यों है? Because you might have not asked for me. That is the reason I feel. तो सबसे पहले तो ये और ये पूरी सर मैं क्या ठीक है. दूसरे branches में आपके climate रखने दिया. क्लाइमेट हो गया, टोपो भी हो गया. I have started soil. एक ब्रांच में तो soil खत्म करके मैंने natural vegetation भी start किया. इसमें opposition का हाथ लग रहा है. Opposition. He was present or he was absent? Yeah. सर आपके लेक्चर में कैसे absent? हाँ, but मैं जब आया था ये था क्या? I remember I came only for one, that is evening lecture. उसके बाद मैंने उसके बाद नहीं. Morning के बाद सर 2 लेक्चर थे आपके. 2 हाँ, लेक्चर. उसमें बात कर रहे थे आप दोनों जो मैं पूछा था आपने को बताया. किसके साथ बात कर रहे हैं? ये क्या मेरा बड़ी लगता है? हाँ अरे कुछ तो बोल रहे थे मैं लेट आया था तो बोला था. अच्छा. सर एक ही लेक्चर है आपका. हाँ, that is the reason. Okay, लिख दो. Point number 1. I'll just give the notes quick, not wasting my time or your time. Hey, can I get that volume? That also I'll show you. And everyone pick up this volume. What is that? Volume number 3 है. जिसमें climate है. The volume number 2. Sometimes I completely forgot your batch. वरना मैं उधर बोलता था अरे ICSE का क्या हो गया? Why they are not giving it to me? It is on page number volume. If you want to take और टेक्स्ट बुक बाद में लेते हैं. पहले वॉल्यूम में आ जाओ. 124 या 125 में. 125 में है. 125 में. नो, क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्लाइमेट. हाँ, इसका ही. It is page number 131. Look here. This is what I have to teach you. What I am going to teach. Factors affecting the climate of India. पहले explain करो या notes दूँ? Notes. सब पर एक्सप्लेन कर दो. सर पहले नोट्स दो. ये सब जो भी एक्सप्लेन करना है सब लेजी है. इनको ना लिखना नहीं सर है. हम चाहते थे कि अपने समझ लेते हैं. What a Hindi it is, huh? I should not learn Hindi from you. Because the first factor is altitude, correct? Second factor is what? जेट स्ट्रीम. अच्छा, उधर latitude दिया है. जितने jet streams नहीं है. तो ऑल्टीट्यूड भी है. हाँ है, मालूम है. I'll follow the order. That is point number 3. And second one is what is it? Influence of Himalayas. Now, if you remember the first lecture, there were few students, है ना? They were absent. So I have told Indian climate is best referred as which climate? Come on, those Tropical are monsoon. very good. What is the reason that I have given? Indian climate is tropical, monsoonal climate or monsoon climate. दो जगह पर AL नहीं आएगा. Those who are present, at least help the present and help the absent. Is it tropical? Yes. How? Tropic Cancer में आता है. Tropic of Cancer passes through central point. Those who are new, just understand. I'm going slowly.
Second, it is monsoon because I had put two words there. Which are the two words? Arrival. हाँ बोलो. Departure. हाँ किसका? Monsoon. Monsoon का. मुझे लगा तेरा दादाजी है कोई. Arrival and departure of monsoon affects my other seasons. Now who can tell me normally India में monsoon कब आता है? South west. अभी जो start हो रहा है ना? आज थोड़ा सा हुआ. June. हाँ June to September. The next month we say it is October to November is our retreating monsoon. So if I say this time instead of June, this enters in the month of July. If at all. So this will go up till October. So my season of retreating monsoon, the next season will move from November to December. Are you understanding what I'm trying to explain? I've already explained them in detail. You can watch that video, whatever it is. So that is why we say influence of monsoon is very strong. Very strong for what? The other seasons. What is very strong for you guys? Coffee. Good. But You have it, is it? Strong coffee. हाँ. sir, monsoon का delay होने से it is also set up El Nino होना. डीले तो हर साल ही होते हैं क्योंकि हम लोग खुद भी हाँ डीले ही है. फिर तू सर मैं तुझे नहीं बोला. पर 9 से है. आज में जल्दी आ गया ना बट. नहीं मैंने मानसून को मैंने 9 से डीले बोला. तू है ना? She is asking either arrival or departure. Any of the one is shifting. It will affect my other season. Because whenever you come late, one famous dialogue you can put it to the teachers. I am perfectly as per IST. What is IST? Indian Standard Time. कौन जाके अलाहाबाद से IST? Sir मैंने मिला है sir. अभी you can fool me because the watches okay, but the mobiles are the one है ना? सिम डाल के ऑन किया जैसे नेटवर्क आया टाइम अपने आप मैच हो जाता है क्योंकि हमारा सैटेलाइट से पकड़ता है. तो बोलते नहीं सर ये पाकिस्तान के सामने मत बोलो टेंशन में लगता है सैटेलाइट से पकड़ा है ना. तो we believe that Indian monsoon is definitely a which monsoon? Tropical monsoon, and it is affecting. So now we are going to list out several factors. I think not several, 7 factor या maximum 8. तो उसमें हाँ पहला है latitude. अभी latitude में my dear friend will tell me. सर आपने पहले 3 तो 10 है, 9 नहीं 10 है. 10 है. पहले 3 करा दिए थे पिछली क्लास में. अरे रुकना भाई शुरुआत तो करनी चाहिए. सर हमें लैटिट्यूड का 4th पॉइंट है इसमें. अच्छा ठीक है जो भी अभी फॉलो कर रहे हैं. It's all disturbances. You are a western disturbance for me. सर हिमालय सर वो सब नहीं कर रहा ठीक है. अभी मुझे और भी डिस्टर्बेंस का नाम ज्योग्राफी में आता है मुझे. तो फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड. तो व्हाट इज लैटिट्यूड फॉर यू? इमेजिनरी लाइन. व्हाट इज TOC स्टैंड्स फॉर माय डियर? एक रुकना. TOC. हाँ ये नया कोई पिक्चर का मूवी का नाम है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कल ही मेरा पापा ने बोला इतना शॉर्ट फॉर्म यूज मत करो लेक्चर्स में. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ इंडिया. बट हमारा बच्चा ये लाइन यूज नहीं करेगा. डिवाइड्स द इंडिया इनटू 2 पार्ट्स. क्यों सर? अभी पाकिस्तान का हो रहा है 3 टुकड़ा तो हम भी क्यों? अरे छोड़ो ना सर वो तो न्यूज़ चैनल में चलता ही रहता है. So we always believe that is why the latitudinal is very important, and India is located in which zone? Torrid zone or temperate zone? It is in temperate zone. So because of this factor, the distribution of heat is not so uniform throughout the country. वो भी मैं आपको notes दूंगा बच्चा. आराम से कर. Second point, influence of Himalayas. Who can tell me what is Himalayas for you? Mountain. The mountain. Very good. Big land mountain are extending from the Indian to the India, China, ये पहले Indian Tibetan बोला. and Bangladesh and Nepal. Basically Himalayas mountain ranges जहाँ पे वो excess. They come in English. My Hindi is not as good. So basically जो क्या ठीक. They prevent the I will explain the He is my geography student. He is preventing the wind only. Let me tell you, when I draw India, the sir है ना पिछले 4 साल से ऐसे ही draw करते हैं India, है ना? She was trying to say it is a stretch of mountains. सर रुको सर और आगे मत चलिए सर, है ना?
tall mountains there. And then हमारा उड़ता ये आ रहा clouds, है ना? फिर इधर एक cloud आया, फिर इधर एक cloud आया. जैसे यार हमारा आरटीओ हवलदार की तरह खड़ा है. ओए, किधर जा रहा है भाई? चल नीचे उतर. These are winding winds which is taking the clouds out of India. तुरंत हम उसमें भी एक रफाइल या कुछ बेटा देते, चल चाइना की तरफ से नहीं, पाकिस्तान की तरफ जाओ. पाकिस्तान बोलता बहुत मारा यार मोदी ने हमको, अभी मत आ, है ना? तो we believe this clouds, if it is escaping out of Himalayas, it will go into Tibet, है ना? Now it is stopping it, so these wind movement will allow this to descend, and instead of evaporation, what process will start? Condensation will start, and then India gets rainfall. So Himalayas are very important for us. One from point of rainfall. Second, किसी ने लिखा नीचे. Sir, it is a military strategic My location. style of sitting is so good. And how did you talk to the teacher? Thank you. You're saying strategically it is important. I love that. But climate में क्या important है? Huh? Sir, it is very cold out there. तो मत जाना इधर. Sir, I had a question. Wait, let me clear this. Then I'll ask you the question. Tibet से जो severe cold winds आता है ना? That is also blocked. If not, it will affect our Punjabi brothers and Haryana sisters. नहीं sir, दोनों brother ही हैं. Punjab and Haryana's rich agriculture will be affected by which wind? The severe wind. Majority answers में सब लोग China लिखते हैं. China मत लिखो. Tibet है ना? So two-way protection. One, it doesn't allow the clouds to pass out of India, escape, not pass, and it does not allow the Tibet cold winds to enter India. हाँ, अभी पूछो. What's your doubt? Sir, why is the top of a mountain cold if it's more close to the sun? This is so nice of the answer. You know sun and its radiation. Sun मालूम है, radiation नहीं मालूम है. Sir, radiation तो पता ही है सर, Chernobyl. हाँ रे, वो अलग है यार, वो न्यूक्लियर रेडिएशन है. ये सन का है. वो भोपाल गैस स्ट्रेटजी क्यों? Sun always heats the bottom of the Earth's surface first. क्यों सर? वो उसका रूल है भाई. क्यों मतलब उससे जाके मैं कैसे लड़ूं? एंड यहाँ से जो रेडिएशन जाता है ना ग्राउंड से, that is how the heat spread. अभी माउंटेन का पीक में वो कितना हीट करेगा ना? The heat always touches the bottom and radiation. So how far away from your Earth's surface, that much you are cooler. That much it is colder in fact. Sir, but it is more like अगर वो heat radiation पहले. अरे बट एक मिनट, तेरा डाउट अभी मैं क्या बोलते हैं वो हिंदी वर्ड के निस्तो नाबूद कर देता हूँ. पीक क्या? हाँ नहीं, मैं न्यूज़ सुनता रहता हूँ ना आजकल. पीक क्या इतना नजदीक थोड़ी है सन के बाजू में जाके दिख रहा है. हाँ तुझे दिखता है कि टॉल है बिकॉज हम 6 फुट का है या 5 वो फुट पता है, लेकिन हमसे तो बड़ा ही है ना मतलब. हाँ डेफिनेटली, बट द हीट ऑलवेज टचेस द ग्राउंड और वहां से रेडिएशन. So what is the ground is over the mountain? ग्राउंड अगर like ground पे mountain. हाँ यू एक मिनट ग्राउंड पे माउंटेन है तो उसको माउंटेन नहीं बोलते माय डियर. तो माउंटेन को पैर से दबा दिया क्या तूने? सिर्फ पीक ऊपर दिखेगा बाकी सब अंदर है. कौन सा फालतू. तो अगर रेडिएशन से आते हैं एक काम कर, तू ब्रेक में मिल, तुझे थोड़ा ऊपर ऐसे अलग होता है. या हम केरला में मेरा एक ब्रदर है, उसको मैंने बोला नारियल तोड़ने को, उसको बहुत तकलीफ होता है. मैंने उसको एक दिन आइडिया दिया, एक काम कर, नारियल का झाड़ है ना 6 फीट नीचे ढल. वो भी हाँ बोला था. हाँ यार अच्छा आइडिया. फिर जब वो ग्रो क्या आएगा ना यार, नारियल सिर्फ इतना ही हाइट में आएगा क्योंकि 6 फीट नीचे है ना. फिर तू ऐसा तोड़ने का इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट. बोले चेटा अच्छा आइडिया है. बोला बे गधे, नारियल का पेड़ 6 फीट के लिए तू कितना अंदर जाएगा पहले. हाँ यार वो तो मैंने सोचा ही नहीं. तू भी वैसे ही पूछ रहा है. हिल टॉप आके क्या ग्राउंड में रहेगा तो उसको हिल टॉप नहीं बोलेंगे. सर तो से जो रेडिएशन है वो ऐसे होता है. शो यार. सन्स रेस कैसे आते तेरे पास? हाँ सेम ही है. The location, it avoids all the mountain peaks by coincidence. it is not missing it. The hilltop cannot absorb the heat like the ground. Simple. ये जरा पागलों का आगे जा रहा है. Is 1 and 2 clear? Write the heading in your notebook. Even I got tense with this kind of doubt. होता है. I remember during school days, some of my friends used to say कि हम लोग अर्थ के अंदर रहता है कि बाहर रहता है.
मुझे ऐसे क्यों डाउट है बाहर रहता है फिर मैं गिरता क्यों नहीं where do we live by the way किसी ने बोला बिल्डिंग का On the earth. आके Not inside or outside or. कैसे लगा Surface. कौन सा surface Earth surface. On the crust of the earth is one of the very layers of the earth. गलती से इसमें wrong answer on the surface of the earth right on मतलब तेरा पागलपन और बढ़ जाएगा right on factors affecting the climate of India right on So can you अच्छा point number 1 decrease the temperature of the eastern और इस रेडिएशंस के वजह से वो वर्टिकली आता है फिर अब्जॉर्ब कर जाता So है 30 पे वो AC. बहुत ज्यादा हो रहा है So 30 पे AC sir. 30 is I don't have the remote right on 17. right on altitude के latitude right on India is located on हाँ ठीक है वो छोड़ दो फिर नीचे लैटिट्यूड देखो ना हाँ बात में दूँ यार ये तेरा हवा सबको लगे ना कटनी का my dear girl what's your name CV leave the altitude as it is start with the latitude जब आएगा ना एरो मार्क डालने के जैसे मैं एरो मार्क डाल के India is located on Tropic of Cancer So you giving this under the Himalayan point. Right? no अरे मैं ये लिखा latitude तेरा पॉकेट में रखा है दिमाग तू यार नीचे से नीचे कर गया 6 पॉकेट है 6 packs. नहीं देख सकता सर के वही सर रोज दिन जाता है संडे right on no I stopped it what is the months सर आपका बुक तो अब नहीं हमारे पास बुक तो नहीं है देखा अच्छा एक मिनट आज आईसीएसई को पढ़ने का मूड है कि नहीं सर इसको नहीं है मेरे पास. तुझे भाई तू तो तुझे चुप रह तो क्या वो बेचारे वो नोट्स का कंफ्यूजन में है मैं क्या करूं और ये बेचारे देख रहे हैं सर का लेक्चर में क्या हो क्या है today I'm in a very good mood so allowing the pupils cockroaches to Sir we went out in that's what. सर अभी कब जा रहे हो लेक्चर्स में इतना रेसेस में जावा फिर रेसेस के बाद Why don't know something? now why do you know all these things huh stupid questions are right on latitude Yes sir. Good. okay man टॉपिक ऑफ कैंसर India is located in the tropic of Cancer in the temperate zone. In the temperate zone. Careful with the spelling. In the temperate zone. Hence, the temperature remains hot and humid throughout the year. Temperature remains hot and humid throughout the year for major part of the major parts of the year. Hence, the temperature distribution is adversely affected. ADVE distribution is adversely affected. Oh, she's very fast here. Adversely affected. Now write the second point, influence of the Himalayas. Point number 2. Yes sir. Himalayas acts as a barrier. सबसे बड़ा Himalayas acts as a barrier by obstructing the rain-bearing clouds by obstruct Is it proper to say rain bearing or water? बाकी clouds एक मिनट तेरा डाउट बादल में एक बारिश मिनट जब पानी का टंकी आता है तो रेन टंकी बोलता है कि वाटर टैंकर Water. हाँ तो टैंकर में वाटर आएगा ऊपर से जब आते समय इट इज रेन ओनली इट इज नॉट वाटर रेनफॉल
सर एक पॉइंट होगा ऐसा मतलब वाटर अरे एक ही काफी है, आज तू जरा चुप रहे। अच्छा, listen, let me ask you one fair questions before this. There were 2 morning lectures. What you guys were doing? Morning lecture, studying. Why are you suddenly got up from sleep like this? Sir, morning lecture is like the morning. So what these guys were doing? Let me hear. They were asking doubts. We were literally so sleepy. The ma'am had to wake us 5 minutes. What, by putting hot water on the face? No, sir. So like everyone get up, ध्यान भी बहुत important है. But next time ध्यान भी तो बहुत ही important है. Next time तो बहुत ही important ध्यान ही तो. मतलब कुछ भी बोले तो ध्यान नहीं दे रहा. Very sir. Let us get seriously with that. Yes sir. तो देख रहा. नहीं sir. It's okay. But ये सब हम लोग लेक्चर के बाद रखेंगे तो और अच्छा है ना? Informal. हाँ, informal. Why should I be informal with you? Right on. Distance from the sea. Sir, इतना ही हमारे का. अच्छा. Bearing हाँ, clouds. हाँ. Rain Rain bearing clouds. Full stop. It helps in the southwest monsoon in India. It helps in the southwest monsoons in. It helps in. I'll ask you get the. अरे ठीक है. एक काम कर. तू जा उसे रिमोट. ये रूम में है क्या देख रिमोट. आराम से. इसमें नहीं है सर उधर. हाँ इधर है. इधर है. वो डिस्टर्ब मत कर. पहले इधर देख के आना. है इधर ही है रिमोट मैंने देखा है. He just want to roam around. वॉशरूम में भी जाकर देखा वैसे. What did I say? Southwest monsoon. Bracket में डाल दो. 80% of rainfall. Southwest. Monsoon. हाँ देखा मैंने तो बोला. Give it to me and you sit down. Sit down. Sit down. Okay sir. जाओ. 80% of rainfall. Sir मैं सुना. उतना ही बोला बस 80% of monsoon. Southwest monsoon in India. 80% of India's rainfall. Second point, उसी में continue करो. At the same time, continue. At the same time, Himalayas also obstruct or prevent. Obstruct नहीं लिखा already लिखा है ना. Prevents. At the same Severe time. cold winds. Himalayas also prevent severe cold winds from entering India put a dash Tibet province from entering India. Bracket में भी लिख सकते हैं Tibet के बाद बस province TIBET Tibet नहीं उसके बाद वाला. province From entering India. Okay. उसके बाद from entering India. province क्या यार मेरा इंग्लिश आपसे भी घटिया है. Sir from entering India का मतलब क्या है? From Tibet province. From Okay, next you directly write down instead of explaining ना. I feel वैसे ही हो जाएगा वैसे. Next is distance from the sea. We always understand 2 places when we talk about distance from the sea. One is Mumbai, another is Delhi. Now Delhi is a which place generally? Landlocked place. Whereas Mumbai? Abundant in water. Coastal region. And which is the sea closer to Mumbai? Arabian Sea. Have you heard about land and sea breeze? Yes sir, yes sir. Land breeze during the daytime and sea breeze during night time. So it moderates the temperature of Mumbai. Because summers are hot, but not seriously hot. We have never experienced a wind which is called as Loo, जो north में summer time में generally blow होता है, which is very scorchy and not very good for the skin also. How about winter then? Winters are also not very severe winter, unlike Delhi, where the temperature might be 9 degree, 10 degree. Schools are open at the time of 9:30 a.m. and Magellan is a very good German next year. नहीं कश्मीर तो अलग है. ये distance from sea में कश्मीर को कहाँ से लाए? रुक जा बीच बीच में ऐसा एग्जाम्पल. Sir, Kashmir is double landlocked, right?
I have to lock your mouth. And as long as I'm in a good mood, he knows it. I will allow all these things happen. And then the next part of allegation will come out. ठीक है, चलो जाने दो. तो समझा? So those regions which are closer to the sea will have a moderate climate. Now tell me what is moderate? Summers will not be very hot and winters will not be very cold. Whereas the landlocked region like Delhi, we always believe sir winter तो बहुत extreme है उनका और summer भी seriously hot ही है. So that is why the sea influence is very important. समझ में आया? चलो लिखो distance from the sea. Regions located closer to the sea. Regions which are located closer to the sea experiences moderate climate. Regions which are located closer to the sea experiences moderate climate, whereas landlocked or interior climate. I'll reduce the speed. I think some students are finding it difficult. Whereas landlocked or interior regions, landlocked or interior regions experiences extreme climate. Experiences extreme climate. Full stop. It is the land and sea breeze impact. Extreme climate. Full stop, full stop. It is the land and sea breeze impact. Land and sea breeze Impact over the regions near to the sea, influencing the climate accordingly. Read करके देखना without explanation I'm giving because I feel अभी आएगा आपका point altitude. उसके पहले ये read करो distance from the sea. And please understand this is a module. In fact, one chapter is 110 marks module. Huh? Similarly, when we complete topo, I don't know when we are going to. But then we have a soil, very small chapter. That is also module. तो पूरा soil एक 10 mark का chapter है. जबकि climate बड़ा है, वो भी 10 mark का ही chapter है. Agriculture जो आपका मैडम ने start किया, that is also 10 marks module. There are 4 chapters. that made sense. 4 chapters. Done? But others run through, Yes. no problem. Okay. Write the next altitude. My dear, अभी मत लिखो. उधर एक स्टार मार्क डालो जहाँ आपने altitude लिखा है. चलो ठीक है, चलो ठीक है. अरे इतना क्या? enough. Don't laugh. It's okay. It's okay. Right. The way she said was sorry. Now the way you are laughing is also fine. Let us behave like a normal student now. Are you? Hopefully. इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं ants and plants. इसको सबको जो ऐसा behave करते हैं. चलो guys, let's move. Altitude refers to height above mean sea level. Height above mean sea level of any given region. I think he was asking that out only. Just understand. I'll explain in a very simplistic manner. full stop. Full stop. Now look here. Now let us put Himalayas in our picture. Right? So these are our N Himalayas, but lofty Himalayas. As his doubt was very genuine, but थोड़ा सा common sense का absence था. And genuine बोला मेरे common sense absence. अरे genuinely common sense नहीं था. It is closer to the sun. So as per his doubt,
this place has to be more hot, है ना? And this place where I said ground level, जो अभी मैं explain करूँगा altitude, in fact this is more hot, correct है? But now then when the peaks or any place which are height above sea level, we call it as at a higher altitude. That is what you are writing? Yes, sir. So sun has the capacity to always heat the earth surface first. And then the heat will spread in the form of solar radiation. देखो वैसे तो हमारा एरोप्लेन ज्यादा देर हवा में रहता है, but it is not closer to the sun definitely. Why it is not getting hotter? अभी इसका क्वेश्चन ये तो सिविल एविएशन में पूछते हैं. पूछते हैं? बिल्कुल. Sir, यही same concept because because radiation first radiates off the ground and first it is the painting scheme of the plane which does not absorb. It is made out of aluminum, duralumin, and plus I don't know whether you have traveled to any international destinations, especially to hotter countries. Morning 10 to 2 or 3, although the AC is at the maximum, but I feel the heat. In fact, I was shouting at the air hostess, what kind of AC it is? So he said, we are flying at so and so. तू किधर से भी fly कर, मुझे ठंडा चाहिए. So you go to Dubai. She was asking, sir, how can I fly, sir? Then why are you flying? Makes my AC a little bit strong. She said, give me some time, sir. पता नहीं pilot का रूम में देखे क्या बोली, तो थोड़ी देर के बाद ठंडा आ रहा था. That's good. So even the plane gets hotter. You know, maximum speed of a plane. I have traveled. I have not traveled in the jet. It was 1800 kilometers per hour. क्योंकि मैं वो वैसा स्क्रीन में बैठा था जहाँ वो प्लेन का चेक कैमरा दिख रहा था. लैंडिंग का टाइम, टेकिंग ऑफ का टाइम, बड़ा स्क्रीन था मेरा सीट के सामने. I purchased the economy ticket only. First class में आया सर. हाँ, तो फिर मुझे फिर मालूम पड़ा मुझे अपग्रेड करके दिया फ्री में. बोले क्यों मैंने? Sorry sir, there is one economy, old lady को economy चाहिए. मुझे क्या? फिर मेरा सीट किधर है? Sir, you got an executive. पहले तो डायरेक्टली हाँ नहीं बोला. क्यों बोलेगा? No, I have booked it. Sir, please, sir, why don't? No, I will not. तो फर्स्ट क्लास में कैसे बिजनेस? First class. तो फिर वो लेडी बोली बेटा आप only for this old lady. If not, I don't want to leave my seat. So the screen was there, food was different, everything was luxury. फिर बार-बार मैं दादी अम्मा को थैंक्स बोल रहा था, वो तो पीछे बैठी थी. But I could see this लाइफ बनानी चाहिए था. हाँ. अरे भाई तो एक मिनट अभी कॉमन सेंस और अभी आगे जाएगा. So whenever these heat is concentrated ना, it needs some lateral surface area to heat to spread. it cannot be ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा होना चाहिए. हाँ तो उसी के लिए उसको कौन बोलते? So now you are away from where the ground surface. So that is why the point is what? Altitude. If the regions are located closer to the ground, it will be generally hot. If the regions are up, that you was asking me, they will be colder. Because these oxygen cylinders are carried by the mountain climbers. Yes, because oxygen is thin enough in the air. Just the वही reason है heat नहीं spread होता है. Sorry, not. ये छोटा सा. And तुझे बाहर छोड़ जाके छोड़ के आने लग रहा है मुझे. चल, right up. Then you ask your doubt. देखो, you are asking of doubt. I don't have any problem. It is the method and the way you pop up like a popcorn. That is little bit. है ना? Neither I put you in a pressure cooker, nor I put some put oil on you to become a popcorn. And there is one other fellow in I think where this one Khargar. उसको है ना सारे टीचर्स चिल्लाते रहते हैं कुछ भी ऐसी बात पूछता है तो मेरे से सर चले मतलब क्या हो गया नहीं सर ऑल द टीचर्स कर्स मी सर मतलब क्यों सर मैं कुछ भी डाउट उसको भी मालूम है कुछ भी डाउट फिर मैंने सर यू माइंड नहीं माइंड नहीं करता हूं बट जिस दिन मैं गुस्सा में रहता ज्यादा मुझे ये मत कर दैट आई अंडरस्टूड सर कभी-कभी आप इतना गुस्से में मेरी तरफ आते हैं मतलब बराबर है मैं कुछ फ्लो में जा रहा हूं ये दूसरा ही फ्लो लेकर आ रहा है बीच में आप पूछ लेते रहो क्या डाउट है अरे पूछ ले भाई ऐसे वो थोड़ा डायग्राम सर मैं इसलिए एग्जांपल हां से पूछ ले सब डायग्राम रिप्रेजेंटेशन चाहिए रहता है सब बोल नहीं सकता हां तो आज यू आर माय गेस्ट पूरा टीम कर
इसको रब कर दे पहले अच्छे से बोल रहा हूँ इसका अच्छे से दर्द होगा उसको और जरा प्यार से सर अगर ऐसे ऐसे माउंटेन है हाँ और इधर भी और एक माउंटेन है और इधर है सूरज, ठीक है सो तो जो इधर वाले लोग जो रहते वैली में हाँ लेकिन प्लीज करेक्ट उनको उनको हॉट होगा कि कोल्ड होगा? ठीक है थैंक यू बैठ जाओ मैं बताता हूँ he is asking a mountain range is it mountain range ये माउंटेन रेंज है कंटिन्यूअसली वो भी मालूम नहीं माउंटेन रेंजेस हाँ पक्का ना डिसाइड कर लिया एंड यू हैव टू सी द वैली एंड दिस ऑल्टीट्यूड पीक है ना अभी whose altitude will be less this whose altitude will be more this so as per the point that I am giving the answer now lower altitude regions will have higher temperature higher altitude regions will have lower temperature simple है तो सन को क्या वो बल्ब है क्या कहीं भी जाके इधर फिक्स हो जाता है इधर फिक्स हो जाता है वो तुझे दिखता है कि इसके पीछे है बट इट इज फार अवे फ्रॉम दी दिस प्लेस है ना सो दैट इज द रीजन वी से कि ऑल्टीट्यूड जिसका लो है टेम्परेचर हाई रहेगा ऑल्टीट्यूड जिसका हाई है उधर टेम्परेचर लो रहेगा सिंपल है चलो इट इज राइट देखो you are asking out doubts other children are laughing or not laughing they will see कि sir is giving more importance to him and we are also deprived of ऐसा मत रहे जब पूछने का आराम से पूछ I am there to explain to you sea level of any given region which is a big factor or which is a bigger factor किसी को समझ दिया है वो कौन है वो which is a bigger factor कौन है which is a bigger factor influencing temperature distribution which is a bigger level of any given region comma which is a bigger factor in temperature distribution which is a bigger factor for temperature distribution full stop इन बोला फिर ऑफ बोला जितना मुंह खोलेगा नहीं बोला जान उसको जनरली इन्फ्लुएंसिंग देखो do I carry anything on my hand or anything nothing with it and you are poking me in between because your brain is a high level falafel type brain you know what is a falafel सब्जी होता है सब्जी क्या होता है दुनिया का आउटलेट जहाँ ऐसा ब्रेनी लोगों को कुछ खिलाते हैं तो चुप बैठते हैं super next continue yes so regions located on a higher altitude regions located on a higher altitude will experience lower temperature this is kind of altitude सब उसी का फिर altitude खुद बोल रहा है फिर बाजू वाले का region sorry located on a higher altitude एक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद मैं जरा कुछ बताता हूँ इन लोग का दिमाग में क्या चलता है located on a higher altitude experiences lower temperature and vice versa yes what is the next point तो कुछ बोलने वाले थे हाँ बोलता हूँ वो तो मेरे दिमाग में रहते ही इतना जल्दी नहीं भूल सकता next is surface winds hey listen देखो one the notes incompleteness like this girl is having when I say the word na she will catch only the first word ये जनरल होता है अरे वो सर the thing I am not your Aryan अरे so the thing is आप बोल रहे थे ना तो मैं समझ गया एंड पर्सन लाइक दिस ना वो लिखता कम है बट उसका दिमाग का जो लोचा है केमिकल रिएक्शन ज्यादा है लोचा तो इसको सिंपल सा एक तरीका रहता है जब भी तू डाउट पूछेगा तुझे इधर बिठा दूंगा दो झापड़ मारने के बाद तो इसमें क्या हो जाएगा एक तो केमिकल रिएक्शन कम हो जाएगा फिर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा यू नो व्हाट इज द चेन रिएक्शन वन डाउट एंड फट करके नहीं सर डाउट ही नहीं सर आप आगे बढ़ो एंड इनका भी एक डाउट क्लियर कर सकते हैं इनको बिठा के इधर बिठा देने का whenever I am telling any one pointer she will repeat that point 10 times orally so that you will not forget I will not forget वैसा नहीं था यार सर
अभी मैं यहाँ भी हूँ नहीं टीचर छोड़ के तो मैं सब चलो ठीक है यार मैं समझ गया यार चलो आगे क्या यार क्या चल रहा है क्लास में आज ऑल यू आर द ट्रबल कोरोना वायरस से भी डेंजरस है लगता है सही पॉइंट है नहीं वही है सरफेस विंड Sir, there is no point in a surface. सरफेस विंड्स Sir, distance El Nino. हाँ वो मैं वीडियो में दिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा मानसून विंड्स Sir, especially to lick don't Sir, there is no surface wind. Sir, actually surface is Surface है ही नहीं sir. carry on चलो लिख There is no surface wind. surface winds especially the monsoon winds affects surface winds का explanation है monsoon winds affects the circulation of affects the ठीक है लिखना circulation of molecules leading to rainfall through through evaporation and condensation process through evaporation and condensation process underline both the process stop temperature distribution same leads to the overall cloud formation process full stop one more sentence this point will end cloud formation process during winter times Full stop sir. bus. During winter time the cold waves blowing from northwest also influences the temperature distribution also influences the temperature distribution बस अब ये दो पॉइंट है I'll just explain but you can write directly from the volume or from the textbook है ना एक तो है western disturbances जो हमारे क्लास में भी है ना एंड दूसरा है jet streams I mean, jet streams is a very burning topic because Pakistan knows what kind of jets entered into their airspace. Okay. है ना? But ये western disturbances, if you remember the rainfall in Mumbai around 1 week before, is it? 2 days we had good rainfall. In fact, the second day it was through this western disturbances. It is not west of India; it is the west of the world. It comes with some clouds. ये जो मेरे से पूछ रहा था, there are two effects of western disturbances. One is El Nino and La Nino. है ना? What is this El Nino? Always remember, it is a dry patch period, correct? And La Nino, sorry, I'll show you the video. You'll understand. Will be a wet patch effect. So you understand, if we have a La Nino effect, we'll have good rainfall. And if you have a El Nino effect, we'll have a less good rainfall or more of a dry patch. और ये पूरा मेडिटेरियन सी का इन्फ्लुएंस है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर. याद है मैंने बोला, when temperature is high, pressure is low. When temperature is low, pressure is high. If you remember, even setting up of our southwest, I might have told this, correct? You might have completely forgotten that there is one big zone which sets up in the central part of India. Actually, पूरा एशिया में होता है. And I told this zone as what? ITCZ. Full form? international
इंडियन Indian tropical climate zone. वेरी गुड क्या बोला Indian tropical climate zone. इंटरट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन और कन्वर्जन जोन अगर एग्जाम में बार बार हमने पूछा व्हाट इज ITCZ बच्चा फुल फॉर्म में लिख कर आता है आंसर नहीं लिखता तो व्हाट इज द आंसर इट इज अ जोन ऑफ लो टेम्परेचर सॉरी इट्स अ जोन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर ड्यूरिंग द सेम टाइम इंडियन ओशन में इसका ऑपोजिट रहता है कैसा रहेगा लो टेम्परेचर मैं देता हूं रुको एंड हाई प्रेशर और विंड कौन सा प्रेशर से कौन सा प्रेशर मूव करेगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर सो विंड्स मूव्स हियर है ना एंड इसको हम लोग ट्रेड विंड्स बोलते हैं एंड इसका रीजन भी है मैं कभी आपको आंसर में दूंगा सो दिस इज हाउ द विंड्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इंडिया फॉर व्हिच मानसून साउथ वेस्ट मानसून और ये मई में बन जाता है मई में बनेगा तब जाके जून और जुलाई में हमको रेनफॉल है if setting above this is delay my rainfall is delayed if this is setting early my rainfall comes early देखो Kerala has got rainfall around 1 week before so India's metro department has announced the monsoon why so Kerala only the wind starts moving so Kerala gets the first shower of India did I tell it is called as mango showers Yeah, sir, yeah. what does mango showers means ripens the mango quick It is also known as cherry blossom. स्ट्रॉबेरी Cherry blossom नहीं होता वो. कुछ भी बोलता है उसके मुंह में जो आ रहा है वो Cherry blossom कहाँ था? अरे चेरी वो अलग है यार तू रुक ना क्यों सबको एक साथ कॉकटेल कर रहा है हाँ Mango shower cherry blossom same. और हमने ना so now you understood what I'm explaining so first point what did I say that is my western disturbances the word is jet because the speed of the wind is very high अब इमेजिन करो 4 to 6 nautical miles का नॉर्मल विंड रहता है ये 10 to 25 किलोमीटर nautical miles का स्पीड है so that is why the name of the wind is put in the form of a flight jet streams normally they blow over north and western part of India especially towards Bengal either it brings rainfall with it with thundering lightning or it takes away the rainfall which is already existing so in Kolkata they call this as Kal Baishakhi it's a Bengali word which might bring some good rainfall but only for some time because of this wind or ye wind normally for any air pilot is very important what is air pilot doing when he is flying up in the sky if he sees जिस direction में वो जा रहा है उस direction में jet stream है he can save the petrol जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स है स्लोप में जाते गाड़ी का इंजन बंद कर देता है अरे ब्रेक नहीं पकड़ेगा ऑन कर है ना but the jet stream fellow can what he will do although the flight can reduce the fuel consumption because of the wind speed it can go faster he will not switch off that's for sure Indian pilot nahi hoga it's like that Sardar ji going up in the chopper तो ऊपर ठंडी लग रही तो मैंने वो फैन बंद कर दिया सर कौन सा फैन जो ऊपर घूम रहा था है ना so this is what we blame the word jet streams understood चलो रीड करो और लिखो खुद ही दोनों है उधर वॉल्यूम में anybody needs my volume they can take ये किसका था नहीं हाँ ले don't mark it and give it back to me जल्दी करो I try today हाँ जी बोलिए रीड करके खुद के वर्ड्स में लिखना है नहीं वो भी लिख सकते एक अच्छा सर आगे बोल देना सर हमारे पीछे को नहीं चाहिए तो लिखो फॉर मैं बोलता हूँ तो दुनिया भर का डाउट आता है अभी बोल दे when you are dictating notes if I disturb you like this what will you do my dear because you don't know anything nothing can you dictate notes then हाँ बेसिक ही है वो लिख सकता है डोंट यूज दिस हिंदी वर्ड्स लाइक समटाइम या क्यूब एंड क्यूबर्ड बोलने तो फिर कौन बना तेरा मन बहुत जगह पर है वो मैंने इधर भी देखा और बाहर भी देखा है हाँ दैट यू आर नॉट नोइंग व्हाट you guys were going I was standing right next to you guys
सैटरडे का इवनिंग मैं इधर ही आया था। Oh, that's what I said. नहीं मैं नहीं समझा है। क्योंकि वो कुछ और कुछ काम में बिजी रहेगा तो कैसे समझेगा ना। तो कुछ और काम करना। तब मुझे समझा कि भोला बकरी। हम कौन थे एक साथ ही मैं वो क्यों बोलूं? तुझे खुद नहीं मालूम है तू किसके साथ घूमता है? एक सेकंड। नहीं छोड़ चलो I'll concentrate on my topics and studies. That is me. जो भी काम हो रहा था I didn't disturb. I came out. अभी दूसरा क्या काम हो रहा था? कुछ सोच रहा हूँ। It's last Saturday. मैं तो था ही नहीं लास्ट सैटरडे से। मैं तो बाहर गया था, क्या बोल रहे हो? तेरा पापा ने क्या आज तक प्रिंटिंग मशीन बोला है? अरे सच्ची मैं बाहर गया था, मैं आया ही नहीं। अरे तो था लास्ट सैटरडे। अरे मैं बाहर गया था। Last Saturday. I didn't say anything to you. Write that. सर मेरे को सोचना था, आपने बोला था, मैं सोचता हूँ। मेरे बारे में इतना इम्पोर्टेंस देता रहेगा तो उस दिन मैं तुझे बुला भी रहा हूँ। He is not even bothered to look at me. अरे सर मैं नहीं था बिल्कुल मैं बाहर था। हाँ, वो तेरा कोई दूसरा भाई था जो बहरा है। चलो अरे मुझे कोई इश्यूज नहीं है। आई एम वेरी डाउन टू अर्थ टाइप। एक दिन तुझे उसके अंदर ही काट देता हूँ। मैं था सैटरडे 3 घंटे हिस्ट्री था। अभी देखा अभी कैसे तू चेंज बट सर मुझे ये नहीं पता मैं कर क्या रहा था। छोड़ दो ना यार। चलो लिखो। सॉरी आई आल्सो कॉलिंग माय स्टूडेंट्स यार। चलो माय डियर। Oh. राइट द सम। तू क्या उधर बच्ची बना रहा है? सर मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा, बताओ। क्योंकि तू दिन में इतना करता रहता तो कैसे याद रहेगा? देखो these guys have written the answer also. Good yeah. Sir, I also wrote. I'm coming to check your good. Temperature distribution leads to ये क्या था? ये तो मैंने दिया ना? हाँ ये jet streams। हाँ ठीक है। और एक लिख दो। Very good. देखो don't disturb the children who are coming here to study. जैसे ये silent है, वो भी silent है ना? वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक है। ये थोड़ा सा fill in the blanks matter है इसका। मतलब blank मुझसे पूछता है। नहीं he is okay। हाँ। देखो साइलेंट या वायलेंट का कोई इशू नहीं है। लेट अस नींद आ रही है साइलेंट। Nothing threshold. What's in jokes? क्या? कुछ नहीं भाई पढ़ो सब लोग। बट तुम्हारा भाई बन गया। टेंशन मम्मी पापा को टेंशन मत दो, ये तुम्हारा भाई कैसे है? Adopted. ऐसा आइटम को अडॉप्ट करते हो। अडॉप्शन सेंटर ही बंद हो जाएगा। And how do they will announce? Shall I mock the way English people do the adoption? मैं ब्रेक में बताता हूँ कैसे करते हैं। At some countries where they do this adoption centers ना, तो बच्चों का भी adoption centers में मैंने कहा कैसे होता है। Did you look at the children in the adoption center? हाँ मतलब मैं पार्टिसिपेट नहीं किया बट मैं जरा दूर रुकता हूँ क्या ये लोग का बहाना। Yes, very good. Very मेरा भी good. हो गया। Adoption कब होता है? मम्मी पापा क्यों यार अपने मम्मी पापा के लिए टेंशन दे रहा है? हाँ good. It's same as it is there. हाँ. अभी पढ़ के पूरा याद है। Shall we go to the next topic? Very interesting. Huh? Yes. We have good half an hour to go, so we can easily finish that topic. So put the heading in your notebook: Seasons of India. And now I do not need any disturbance, huh? Especially from. हाँ, तो समझ गया जिसको भी मैंने बोला. So now I will perfectly study, and I will make you to study. If not, you are not going to sit inside the classroom. चलो, put the heading: Seasons of India. We'll go as per your volume or as per your textbook. But then I can take small freedom to, break free from that heading and explain you all the seasons in one go. So just help me with that. Just help me. First, क्या season दिया? Volume textbook का बता, same. Textbook. नहीं काम करते. Volume का ही करते. Volume का first season क्या है? Summer. Hot and dry summer. Just a minute. And what is the time period? Everyone copied all this one? हाँ. And then wait, ये एक ही topic डालना है. सर ये आपने पिछले बार लिखवाया था वो. ये तो ये explain कर दिया क्या मैंने? Explain पता नहीं पर लिखवाया था. लिखवाया नहीं. अरे मेरा लिखवाया. पूरा 4 season explain कर दिया. ये देखो मैंने लिखा.
ये लिखा तो गड़बड़ है। तो मतलब मैंने किया है यू आर माय गारंटी है, क्यों विचार करना है ना, तो तू नहीं करता है पॉइंट याद है चलो जाने दो। listen those who are joined new na, they have not listened na, so there are two main season which you everyone has to understand, okay, and explain them simultaneously using our map of India in a very different way, okay. Now look, so this is southwest monsoon, correct. What is the other word I will be putting that? This is northeast monsoon. What is the other name for southwest monsoon? Anybody? अरे जो present था बोलो. This is called as summer monsoon. This is called as winter. Hey, those who are new and old people just understand this. Once again, I am explaining. This is also called as southwest. This is also called as northeast. Now, who can tell me the time period? Southwest का कब से कब तक India में? June to September. And this is October to November. Got it? Now, what is the wind reversal system? What is this ITCs? And you have to be very understanding. Okay, this is the May mid, or I can say mid of May. So, what is the setting? Correct? Now, same time IO is here, AS is here, and Bob is here. Bob, Bank of Baroda. So the winds moves when June first week starts. Already it picks up a lot of moisture from IO. While coming in, it picks up moisture from Arabia. It picks moisture from. Exam में पूछेंगे. There are two branches of southwest monsoon. First branch is Arabian Sea branch and Bob branch. Okay. By the maybe like June 10th or June 5th, it is going to hit this area where Himalayas are obstructing them. And when Himalayas are obstructing them, these clouds, through evaporation, it will start which process? Condensation. And when condensation starts, entire clouds gets diverted, correct? So the first region within India is Kerala, and outside India is Andaman and Nicobar, which receives rainfall more or less on June 10th or June 5th, whichever is the day. So that is the beginning of which monsoon in India? समझ में आया? इसी का बोलते हैं हम लोग reversal of wind system. अभी this is the wind which blows from where to where? Sea to land. तो generally इसके पास क्या रहेगा? Moisture ज़्यादा रहेगा, correct है? Now it is reversing, it is going out. So this is which wind? The wind which is moving from land to sea. So now the wind's movement ऐसा रहता है. India से बाहर जा रहा है. Retreating. And this part, Andhra and Karnataka, and this part is our Tamil Nadu, something like this. Only the coastal part of Andhra and Tamil Nadu will receive rainfall when the entire country is going to have what? October to November, क्या start होता है India में? Winter. Since 80% is given, and these are the winds which are blowing from land to sea, these are generally which winds? Dry winds. So India को only 20% rainfall. Only कौन सा part को मिलता होगी? AP and TN. Understood? But it is beneficial for these two states because उनका winter crops के लिए बहुत helpful है. Which is that winter crop in India? Kharif or Rabi? Kharif is rainfall crops. Rabi is a winter field crops. सर वो पार्ट नहीं समझा. कौन सा part में India? आंध्र प्रदेश and तमिलनाडु. देखो इसका जो direction है ना, it is moving out of India. North से है and it is checking out of India from east. Already जितना इसके पास moisture था जब इंडिया के अंदर आया उसने पूरा rainfall हो गया. Now ये season में क्या हो जाता है? Here the temperature will be low and here the temperature will be high. तो high pressure is in the center ना, तो ये wind यहाँ से बाहर निकलता है. Since it is moving from land to sea, correct? The winds will not have a lot of moisture. And since these two parts only lying on their way, कौन?
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उसका बे में पड़ता है, तो जाते जाते रेनफॉल देके इंडिया से बाहर। So that is why it is retreating, and this is called as advancing. अभी एग्जाम में ये पूछेंगे advancing monsoon मतलब आपको साउथ वेस्ट ही लिखना है ना? समर monsoon तभी भी वही लिखना है। जबकि ये retreating है, retreating मतलब it is going out of India. क्लियर है? ये दोनों सीजन समझ जाएगा ना, then summer and winter बहुत इजी है। अभी समर के लिए हाउ डू आई एक्सप्लेन? मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया गेट्स डायरेक्ट सनलाइट। व्हाट इज दिस डायरेक्ट सनलाइट? बताओ भैया, सनलाइट बहुत पूछ रहा था मेरे से। जो रेज है ना वो डायरेक्ट रहता है, तो हीट इज मूविंग नॉर्मली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, and it is not very sharp increase, gradual increase. By the time you are central India, north India, the temperature will be very high. Similarly, when there is a fall, we are getting slanting rays of the sun. You know what is slanting? Where direct rays नहीं है, तो the temperature भी drop ऐसे suddenly नहीं होता। कल तक 30 था और आज 0 नहीं होगा, जैसा लंदन में है या बाकी कंट्रीज में। It will very gradually will fall. Then also south is again hot. आप विंटर टाइम में जाओ तभी भी आप लुंगी और वो धोती में घूमता रहेगा उधर, क्योंकि उधर उतना ही गर्म है जितना गर्म वो समर में था। बट द नॉर्दर्न रीजन्स विल एक्सपीरियंस विंटर। देखो snowfalls are very high in India. Only special parts of Kashmir, only special parts of this Dras, Kargil, -40 is their average temperature. Forget about the winter temperature, -70 में चले जाता है। So that is why we are saying हमारा winter क्या है? It is not cold, it is in fact cool. You understood what is cool? 23-24 degree Maharashtra में रहता है। For you and me, throughout the year we are experiencing 30 plus is the temperature. जब 23 आता है, you and me feel very cold, which is not at all cold. Understood? चलो, let's write. एक काम करते हैं, mark करते हैं instead of writing. Yes. Everyone is having a volume or a textbook. Yes. वॉल्यूम है सबके पास? अच्छा, फिर मैं ब्रीफ पॉइंट्स देता हूँ। चलो लिखो। नो वरीज, आई विल गिव यू ब्रीफ पॉइंट्स। सर आपका ही वॉल्यूम है। अच्छा, आपको चाहिए तो रख लो। चलो यूज दिस। ए राइट डाउन सीजंस में। फर्स्ट सीजन राइट डाउन हॉट एंड ड्राई समर सीजन। सीजन, हाँ, पॉइंट नंबर 1 extends from March to May. Extends from March to May, in which direct rays of the sun, experienced over direct rays of the sun is experienced over major parts of India. Direct rays of the sun is experienced over major parts of India. Underline only the word direct rays. हाँ, बस. Second point. The highest day temperature is noted in Rajasthan and central India. Rajasthan western, Rajasthan and central India. Bracket में डाल दो 40 to 50 degree Celsius average है। Rajasthan to central India, right, 40 to 50. In Rajasthan, which is the place recorded highest? One is Jaisalmer. Hard desert. हाँ, Jaisalmer. It is 52 degree. And same night, the temperature drops to 10 degree. That is a problem of that region. Like a morning to by 12, the temperature is at the highest. By 2, it might dip to 50. By evening, it comes to directly to 20. And by the time you experience the night, it is 10 degree.
हाँ इतना हाँ मतलब ह्यूमन बॉडी कैन नॉट मतलब सूट करेगा. Hey, did I explain what is jet lags anytime? Yeah, so it's very common. हाँ Everyone बोल. knows this. हाँ तो बोल. Sir, as you know, when I don't know. sir, there are different forms of country, there are different shapes. So when a country is horizontally big, like Russia, like USA, they will have different. इतना 15 साल या 17 साल में ये पहले बार में एक्सप्लेनेशन जेट लैग. Sir, it's not. आएगा sir. आएगा. Give me a chance, sir. Though as they're horizontally big, sir, and the Earth rotates from west to east. तो they will have different time zones. लेकिन India vertical है, it will not have different इंडिया time वर्टिकल zones. है, कल तो हॉरिजॉन्टल बोला था कोई. अरे sir, Russia और India. ठीक है. वेरी गुड एट लीस्ट यू नो समथिंग. मैं सिंपल वे में बोल देता हूँ. Or sir, when you travel from another country like which is a different time zone and you come to India, like अभी अगर US में रात है and you travel from plane 18 hours to India, वो सुबह है and they experience jet lag because the body clock is set to the बॉडी में क्लॉक है, मुझे तो मालूम नहीं है. कॉस्ट वेज metaphorically. अच्छा बेटा, मैं सिंपल में समझाता हूँ. देखो एवरी टाइम ना दिस ब्रेन इज वन, एवरीबॉडी नोस, व्हिच कंट्रोल्स योर बॉडी एवरी एक्टिविटीज. एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन देयर वाज नो लाइट्स नथिंग. सो हमारा माइंड क्या करता है, नॉर्मली सनसेट के बाद ना देयर इज वन सीरम और समथिंग इट एक्सक्रीट्स एंड मेक्स द बॉडी टू अंडरस्टैंड नाउ द सन हैज सेट. आफ्टर फ्यू आवर्स यू स्टार्ट yawning. मतलब ब्रेन ने कमांड पास कर दिया. For last 15 to 16 years you are living in India, where your brain is accustomed to 7, 8 or 9 or maximum 12. But as he said, when you fly horizontally to a different zone, there your body and mind does not get accustomed. है ना? उधर क्या करता है, एग्जैक्टली 12 घंटे का डिफरेंस है. जैसे मैं जब उधर से मेरे फैमिली से बात करने के लिए कॉल करता था ना, स्पेशली टू माय मॉम, मेरी मम्मी बोली नींद आ रहा है बात. अरे मैं सुबह से मुझे नींद आ रहा है, फोन रख. मैं बोलने से पहले रख के सो भी जाए. तो अपना ब्रेन क्या करेगा, मिनिमम इट विल टेक 2 days or 3 days, because here that time what was happening, sunset, and there what is happening, sunrise. अभी ब्रेन को ये तो नहीं बोल सकता ओए मेरा वीजा लग गया, मैं उड़ रहा हूँ, तू भी मेरे साथ उड़. ब्रेन विल टेक सम टाइम. दैट इज व्हाई दे हैव सेड इट इज जेट लैग. वरना कुछ पीपल तो आजकल बहुत प्री अकस्टम्ड रहता है. अभी जैसे मैं फ्लाइट में बैठते ही सो ही जाता हूँ. कौन सा करना है, छोड़ना, जब उतरने का खुद ही उठा देता. जैसे फॉर द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू शिरडी इन अ लग्जरियस ट्रेन इन एसी कंपार्टमेंट. मैंने नॉर्मली कार या बस में जाते हैं, तो मुझे अभी भी याद है, मैं सिर्फ थाने से निकला उतना याद है, ऊपर जाके मेरा बर्थ में सोया, उठा ही नहीं. After few hours I could see one of that train cleaner sweeper is coming. भाई साहब बोले क्या ट्रेन रुक गया. तो नहीं है, पिछले 2 घंटे से आप सो ही रहे हैं, ट्रेन रुक गया. तो अच्छा तो जगह ही क्यों नहीं. नहीं साहब आप बहुत अच्छा सो रहा था ना. तो फिर अभी क्यों बोला था. नहीं साहब अभी एक आधा घंटे में ट्रेन मुंबई जाएगा. जल्दी बोलिए तो मैं निकलता. तो मतलब ब्रेन को मैंने इतना कमांड है कि अभी मुझे सोना है और मैं सो गया. और ये हम लोग अगर सोच के सोएंगे ना मुझे 4 घंटा या 5 घंटे में उठना है, देन ब्रेन इज द ओनली ऑर्गन व्हिच इज कंट्रोलिंग यू. एंड लेट मी बी वेरी फ्रैंक, एवरी डे व्हाइल बिफोर गोइंग टू स्लीप, व्हाटएवर यू मस्ती डू, व्हाटएवर फन यू डू, यू ट्राई टू ट्रेन योरसेल्फ. आप सोते समय बोल के सो जाओ कि मुझे कल सुबह 5 या 6 बजे उठने का. देखो द ब्रेन रियली लिसन्स टू यू. एंड भले आपका मम्मी बोले, पापा बोले तू गधा है, गधी है, तू ये है, वो ब्रेन नहीं सुनेगा. But brain will always listen to you, and that is why I always say to my students who are मस्ती करते, ठीक है ना, उसका नेचर I like that. But सोने से पहले आप अपने ब्रेन को बोलो कि I am doing good, है ना, I am doing best. But मम्मी है ना मुझे क्या बोलती रहती है. And the brain will catch your words. To be very frank, अभी मेरे ही घर पे हुआ है. I've lost my sister due to kidney related problem. तो मुझे याद है जब वो डायलिसिस पे आई ना, हम लोग वो टैबलेट्स वगैरह ये लेके मेरा क्या होगा, मैं तो मरने वाली है. मतलब बार बार वो बोलते क्या हो जाता है, द ब्रेन विल टेक योर वर्ड्स. अभी आई रिमेम्बर माय डैड डिपार्टेड, आई कुडंट अटेंड हिज फ्यूनरल आल्सो. तो मुझे याद है डैड का लास्ट वर्ड यही रहता था, मैं मरेगा और तू लेक्चर लेगा, मैं मरता रहेगा तू लेक्चर लेगा. लिटरली इट हैज हैपेंड. कभी मेरा मॉम को बोलता हूँ चुपचाप रहे, तेरा मुंह में कुछ अच्छा बोल. व्हाट डज इट मीन? Although the God has made you to understand your brain,
but this the mouth which has to be controlled everywhere. वो फटे हुए बांस की तरह कुछ बहम बहम बजते मतलब हाँ that is correct. देखो दोस्तों के साथ है, कुछ टीचर्स अभी मेरे जैसे हैं, I am very accustomed, मुझे कोई issues नहीं, but when you are disturbing my topic, that is the time I pounce on you. है ना, बच्चे हैं, अभी मस्ती नहीं करेगा तो कहाँ करेगा. अभी जैसे I have seen some teachers right from the door entry, he or she is very bossing, and बेचारा वो आप देखते रहते यार ये कब जाएगा या जाएगी. फिर मैं भी कुछ कम नहीं है, मेरा पूरा घर का गुस्सा आप पे उतारता हूँ. आज है ना सर है ना शायद वाइफ नहीं किसी से तो झगड़ा करके आया एंड आई एम ट्राइंग टू पुट ऑल माय एंगर ऑन यू. इससे फायदा किसका है? नुकसान मेरा ही है. अब लेकिन आपका क्या नुकसान है सर? आप तो मेरे से चिल्ला रहा है. बिकॉज माय ब्लड प्रेशर विल बी एट द हाईएस्ट. I have seen teachers when he was only 25, he joined as a healthy teacher. 30 health है, healthy नहीं है. सुनते जाओ. 35 and 40 अभी बीपी डिटेक्ट हुआ है सर उसको. 50 प्रेशर हो गया है, हार्ट में इश्यूज है, ब्रेन में ट्रबल है. रिटायरमेंट से पहले हो गया राम नाम सत्य. Sir, that day he was shouting so much, sir. And suddenly he fell down, sir. तो मुझे क्या होगा? हार्ट में अटैक आया सर. अरे हार्ट अटैक वही होता है सर. And we were so worried. मतलब क्यों जिंदा नहीं आने देते? नहीं जो बोलना. And चलो बच भी जाता है तो सारा क्लास जाता है सर से मिलने या टीचर से मिलने. And टीचर अरे वाह मेरे बच्चे, फिर उनके आंख से नहीं मैडम आराम से. एंड फिर आप लोग पूरा झुंड से जाके डॉक्टर से बात भी करते हैं. एंड वो मैडम तो और भी खुश, अरे मेरे बच्चे जाके डॉक्टर से बोल रहे हैं देखो. एंड फिर डॉक्टर आता है, मेरे बच्चे क्या बोले, बहुत प्यार करते हैं देखो. हॉस्पिटल में भी आया तो ऐसा कुछ नहीं. उन्होंने बोला आपका डिस्चार्ज कब है? तो फिर आपने क्या बोला? बोले 1 हफ्ते के बाद. तो उन्होंने क्या बोला और 1 महीना रखो. वो आएगी फिर से टेंशन ही रहे. अच्छा ऐसे बोले इसी के लिए बोला टेंशन मत ले, टेंशन मत ले. तो व्हेन यू आर टेकिंग टेंशंस ना, इट इज नॉट टेंशन फॉर मी. अभी दूसरे टाइप का टीचर, इधर से एक चिल्ला रहा है, उधर से एक चिल्ला रहा है, और मैडम ही क्या अपना पढ़ाई चालू. हाँ वेरी गुड. वो अपनी दुनिया में. अभी रिएक्शन उधर क्यों आया? So we always believe when we discuss so many things ना, I have to take you with me, not with him. He's going alone. Of course. हाँ, फिर के साथ में हेल्प चाहिए क्या? चलो, let's finish the topic. नहीं रुको, बंद ही कर दो. किधर हो? बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, because they are directly at the firing line ना. Second sentence लिखना. Second point. हाँ. It is during the month of May. Same. Low pressure develops over major parts of India. ब्रैकेट में क्या लिखेगा? लैंड और सी. लैंड over major parts of India. ब्रैकेट में डाल दो लैंड. Low pressure develops over major parts of India. देखो उसके साथ रहो, वो कुछ लिखता ही नहीं, बस बैठा रहता है. कभी कभी मन आएगा तो 2 वर्ड लिखेगा, फिर मेरे तरफ देखेगा. लिख दिया. ये लिखने में क्या है? It is during the month of May. Low pressure develops over major parts of India. Oh my God, these two girls are too good, huh? ब्रैकेट में लैंड लिखो. major. How many girls are there? Only 3. उसमें से 2 आप है. वो बेचारी वो अकेली है. Second point. Next point. Okay. This continues over the entire northern plains. ब्रैकेट में डाल दो लो प्रेशर.
क्योंकि मतलब टेम्परेचर हाई है ना. Drawing the winds, drawing or attracting the winds. If you don't want to write drawing, attracting the winds from the southern part, where low temperature and high pressure prevails. Attracting the winds from southern part, where low temperature and high pressure prevails. Where low pressure, high pressure wave. Low pressure, high pressure prevails. Low temperature. आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ. Next point. It is the origin of trade winds. Bracket में लिखो. Northeast. Oh. It is the beginning or origin of trade winds attracted towards. Attracted towards the central part of India. Attracted towards the central part of India. बस. अभी next season लिखना south west slash डालो. Advancing monsoon season, southwest or advancing monsoon season. Hey, please read that summer season carefully. Or you feel Southwest or summer season, advancing monsoon season. That is. Read my notes so that you're learning from there. Is there? Your school syllabus for your coming exam has been told. Yes. Because majority of my children are saying कि 1st June या 2nd June को खुल रहा है और 3rd June को उनका exams है. ऐसा? 30 हमारा 30th को 30th June. And when is your exams? 30th. Oh my God. अच्छा 30th June time है. Anybody in the first week of June? Any school? No school, na? And if at all, then tell the portion also. Because now what is the big challenge? There are more than 2 teachers coming in. And you understood. So you have to intimate me or any other teachers so that we inform them कि ये portion उनको जल्दी करो. जैसे कोपर के नाम I am handling the entire ICSE geography. Okay, चलो. अभी now we are writing southwest or advancing monsoon season. Begins in the month of June or begins in June, month लिखो, and extends up to September. Southwest or advancing. दोनों एक ही है ना, monsoon. Extend up to September, June to September है ना, full stop. It is the high pressure winds from IO. What is IO? Indian Ocean. High pressure winds from Indian Ocean blowing inside India through पहले one लिखो, Arabian Sea branch, 2 Bob branch. 1 AS branch पे लिखा तो चलेगा, AS branch, and 2 is Bob branch. Next point. These winds are moisture laden. What is moisture laden? Full of moisture. These are moisture laden. LAIDEN. Winds. Idhar. Where is he searching? It's here. Moisture laden winds which are
mainly responsible for monsoons throughout the country. Monsoons throughout the country. Next, month of June. It is the month of June. Next one. Next one. It is the month of June. It is the month of June and beginning of SW. What is SW? Southwest. It is the month of June and beginning of SW. Southwest. Which is eagerly awaited. Which is eagerly awaited that agricultural season begins. Agriculture. Season begins. Next. The mountain ranges in India. Western Ghats, Aravallis, and the Himalayan range. Generates a notable influence. Generates a notable influence as relief feature. You know what is relief? Mountains. RELIEF. Relief feature dash mountains. Then the last sentence for this para. More than 80% of India's total rainfall, more than 80% of India's total rainfall is received through this monsoon. With Meghalaya. Bracket, you write the name of the place, huh? It is not Cherrapunji, my dear. Mausin Ram. तो देखो मैं बहुत सिंपल वे से आपको याद करना बोलता हूँ. मौसी और राम बीच में एंड डालता हूँ. मौसिन राम. मौसिन राम है कि मौसिन राम? जो भी जैसे लिखना है. तो जो प्रोनाउंसिएशन पूछ रहे हैं क्या लिखने बोल रहे हैं? With 1020 centimeters of annual rainfall. Annual rainfall. सेमीकोलन डालने का. राजस्थान का प्लेस है ऐसे ही बोलो. Some part of Rajasthan. Less than 30 centimeters of rain. राजस्थान में बहुत कम है. मेघालय में सबसे दुनिया का सबसे ज्यादा है. हाँ, one of the rainiest region in the world. चलो, thank you. I'll come back next 15 minutes. Please don't disturb. Don't get my wrath now. I have to complete the push. Sir. Yes, my dear. इधर